ट्रंप जदों आवेगा लग पता जाएगा। और अब सारे फैशिस्ट दुम दबाकर भाग रहे हैं। कहते हैं बुरे दिन शुरू हो जाएं तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। डॉक्टर मुईद पीरजादा के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने जिस लॉबी को ट्रंप के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए हायर किया था, उसका सारा दारोमदार साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो पर था। आज ट्रंप ने माइक पोम्पियो को भी फारिग कर दिया है। माइक पोम्पियो को ट्रंप ने इसलिए निकाला क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए यूक्रेन की जंग के हक में बोलता रहा, जबकि ट्रंप इस जंग का मुखालिफ है। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप अपनी टीम तश्कील देने में मसरूफ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को बतौर वजीर खारजा चुन लिया है। वो इस ओहदे पर तैनात होने वाले पहले लातीनी अमरीकी होंगे। मार्को रूबियो उन 15 सेनेटर्स में से एक हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए $95 अरब की फौजी इमदाद के खिलाफ वोट दिया था। ईवान नुमाइंदगान के रुकन माइक वॉल्टिस ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। इससे पहले ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब के लिए एल स्टीफानी का नाम तजवीज कर चुके हैं। ये शख्स मार्को रूबियो डिक्टेटरशिप के सख्त खिलाफ है, जमहूरियत का फैन है। ये शख्स पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता है। ट्रंप ने वज़ारत खारजा के लिए कमाल बंदे का इंतखाब किया है। हमारे वालों के लिए इसे टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। इसे अपने आमराना मौक़िफ़ पर लाना और जमहूरियत के खिलाफ इक़दामात पर अपना हामी बनाने में इन लोगों को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात एक रीत रिवायत बनता जा रहा है, जबकि ट्रंप की खारजा पॉलिसी इससे बिल्कुल मुतसादिम है। वो जमहूरियत को सपोर्ट करता है, इसलिए उसने चुनकर ऐसे बंदे को लगाया है जो इस बारे में अपने मौक़िफ़ में जरा भी लचक नहीं रखता। अमेरिका के नए वजीर खारजा मार्को रूबियो इंतहाई जमहूरियत पसंद इंसान है। वो फौजी ताकतों के जमहूरी कुव्वतों को दबाने के सख्त मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि फौजी जर्नेल अपनी ताकत से मीडिया को कंट्रोल करते हैं और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें हमेशा जमहूरियत का साथ देना होगा। मार्को रूबियो ने आमरीत को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा, इस वीडियो में देखें। Here's why. These dictators were no friends of America. Give me an example in Egypt, where people now say, well, this stuff didn't happen when Mubarak was there. No, it happened, but in a different way. Let me tell you the deal Mubarak and other dictatorial leaders in the regions cut with extremists. Here's the deal they cut with extremists. As long as you don't do anything against us, you can do anything you want anywhere in the world. Conduct all the terrorism you want. Attack Americans, blow up a train in Spain, do whatever you want. Just don't do it here. If you do it in your country, if you do it in our country, we'll cut your head off. If you do it somewhere else, that's not our business. That's the deal these dictators cut with extremists. And that's not a coincidence that there were Egyptians involved in the 9/11 plot. And these were not Egyptians that came from poor families. They came from prominent and distinguished families in Egypt. Which leads me to the second point. These dictators allow anti-Americanism. Because imagine if you lived in a dictatorial country. You're not allowed to protest the government. You're not allowed to protest your leaders. There are only 2 things you're allowed to protest: America and Israel. And so that's what everybody does. It's almost a release valve for frustrations. And then they've got a state-controlled media that feeds into anti-Americanism. Do you know that there are media outlets in Egypt under Mubarak and even now that tell the people in Egypt that in America denying the Holocaust is a crime? Denying the Holocaust is dumb, it's outrageous, but it's not a crime in America. And yet they spread these lies, these anti-American lies through the region. Of course there are people in the region that hate us, because our so-called dictatorial friends and allies have allowed anti-Americanism to grow and be fostered, because it helped them hold on to power. So these dictators were not good for the region and not good for America. And the choice should not be between dictators and democracies. The second fallacy is, well, we'll just have an election, everything will be better. That's not true either. Democracies can elect people that don't like us too. So this is not an easy issue to confront. But disengaging from the region is not the solution. मार्को रूबियो वो शख्स है जिसने 3 महीने पहले सेनेट में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तानी फौज की इमदाद बंद करने की अपील की गई थी। उस पर CNN पर बहुत ही इंडियन प्रो तजिज़ियाकारी पेश की गई, जिसमें पाकिस्तान तमाम तर दहशतगर्दी का जिम्मेदार हो। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। U.S. Senator Marco Rubio has introduced the United States-India Defense Cooperation Act. The U.S. Senator on Thursday introduced this bill in the Congress, which proposes to treat India at par with its allies like Japan, Israel, Korea and NATO allies regarding technology transfer, support India in its response to growing threats to its territorial integrity and bar Pakistan from receiving security assistance if it is found to have sponsored terror against India.
Okay, so that's the latest, this bill that has been introduced in the Congress that very significantly proposes to treat India on par with its allies. So that's the latest coming in. In fact, it is extremely important, this bill, because it's a sign of strengthening US-India security partnership as well, the US-India partnership, which is very important, which is very critical to countering influences, especially from Pakistan and China. This is being done to strengthen the partnership, and it is also extremely essential, as Mr. Rubio mentions, to enhance the strategic, diplomatic, economic and military relationship between both the nations. Akanksha joins us for more on this. Akanksha, a very significant, step for India, just placing it on par with allies like that of Japan, Israel and Korea. Absolutely, Avantika, not just significant but equally historic, because remember, this is the first time that such an India-centric bill is being unveiled in the US Congress. We don't know how far this bill will go, considering we are already seeing a deeply divided Congress because of the US presidential race, but do expect, because of the kind of bipartisan support we've seen for the India-US relationship, to, in fact, even if the bill doesn't is kill this Congress, it may be taken over to the next Congress post the 24 US presidential election. But let's also inform the viewers what this bill is all about. The bill notes that, the US-India partnership is extremely vital only because at the moment, the United States looks at India as a very reliable ally, one that can counter China's growing clout and its influence in South Asia. The bill also states that it is very essential for Washington to enhance its strategic, diplomatic, economic and military relationship with New Delhi. At the same time, let me highlight that this is a bill that was introduced today by US Senator Marco Rubio, who we all know is one of the tall politicians from the Republican Party. So do expect that change in stance if the Republicans are to come to par, Avantika, because we've already seen the kind of interventions that have been happening during the presidency of Joe Biden. U.S. State Department has been making several interventions as far as India's internal matters are concerned. Not to forget the fact that if this bill All right. Thanks so much for joining us. It is indeed a significant accomplishment also for India to have enabled this bill to be introduced in the Congress. A quick break right here on the broadcast. But the news and updates will continue on the other side with my colleague Poonam. Keep watching. माई का सिक्योरिटी एडवाइजर भी किसी से कम नहीं। वो अफगानिस्तान और तालिबान के लिए किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं रखता और उनके सख्त मुखालिफ है, बल्कि उनको सपोर्ट करने वालों के भी खिलाफ है। मिलिए ट्रम्प के सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्टिस के साथ इस वीडियो क्लिप में। Pakistan is completely complicit. Their military is supporting this Taliban offensive. I want to see all aid frozen and possibly sanctions against the Pakistani military. अमरीकी सफारतकार के तौर पर मार्को रूबियो का नाम गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल नुमाया रहा है। इस सवाल के जवाब में कि क्या वो काबीना की किसी सीनियर पोजीशन के लिए मुंतखब हो गए हैं, मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता हफ्ते CNN को बताया कि मैं हमेशा इस मुल्क की खिदमत करने में दिलचस्पी रखता हूँ। 2016 में जब वो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए दौड़ में शामिल थे तो उन्होंने ट्रम्प को झूठा फनकार और सदारत की ख्वाहिश रखने वाला सबसे बेहुदा शख्स करार दिया था। दूसरी जानिब राइटर्स के मुताबिक नौ मुंतखब सदर ट्रम्प ने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक वॉल्टिस को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब किया है। ट्रम्प के वफादार माइक वॉल्टिस, जिन्होंने नेशनल गार्ड में बतौर कर्नल भी खिदमत अंजाम दी हैं, ने एशिया पैसिफिक में चीनी सरगर्मियों पर तनकीद की है और इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को खित्ते में मुमकिना तनाज़े के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कौमी सलामती का मुशीर एक ताकतवर होता है जिसे सेनेट की तौसीक की जरूरत नहीं होती। माइक वॉल्टिस ट्रम्प को कौमी सलामती के अहम उमूर पर ब्रीफिंग देने और मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ राब्ताकारी के जिम्मेदार होंगे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के लिए बाइडन इंतजामिया पर तनकीद करते हुए माइक वॉल्टिस ने खुलकर ट्रम्प की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक हालात को सराहा था। उन्होंने रवां साल के अवाइल में एक तकरीब के दौरान कहा कि रुकावट डालने वाले अक्सर अच्छे नहीं होते। हमें कौमी सलामती की एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन में पड़ी पुरानी आदतों में मुब्दिला बहुत से अफराद को इस रुकावट की जरूरत है। ट्रम्प वो रुकावट डालने वाले हैं। माइक वॉल्टिस वाशिंगटन के सियासी हलकों में तवील अरसे से जाने जाते हैं। वो दिफाई सेक्रेटरीज डोनाल्ड रिम्सफील्ड और रॉबर्ट गेट्स के लिए दिफाई पॉलिसी के डायरेक्टर थे और 2018 में
कांग्रेस के लिए मुंतखब हुए अमेरिका के नए वजीर खारजा जो ट्रम्प की सदारत में ओहदा संभालेंगे, सेनेटर मार्को रूबियो एक बाअकीदा मसीही हैं जो हर इतवार की इबादत में शरीक होते। वो खुद भी मुहाजिर खानदान से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान के मसीही हुकूक से हमदर्दी रखते हैं। हमारे वजीर खारजा और वजीर आजम ने ट्रम्प को मुबारकबाद देने के लिए 2 ट्वीट किए थे जब अभी ट्रम्प की जीत का ऐलान भी नहीं हुआ था। उस वक्त ट्रम्प लीड कर रहे थे और मुमकिना तौर पर वो अमेरिका के अगले सदर होंगे, लेकिन सफारतकारी के कुछ उसूल और जवाबित होते हैं। अगर ये ट्वीट सिर्फ बतौर सियासतदान होती तो कोई मजाइका नहीं, मगर जब आप एक रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कम से कम सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखना चाहिए। ठोकेगा वो तुम सबको, चाहे रोजाना ट्वीट्स करो, जितनी चापलूसी करना है करते जाओ। मुंतखब अमरीकी सदर ट्रम्प हलफ उठाते ही 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर दावा वालों की सजा माफ कर देंगे। सोचा पाकिस्तान में 9 मई के बाद अमेरिका की मिसाल देने वालों को बता दिया जाए आपके लिए हालात ज्यादा खुशाइन नहीं है। ट्रम्प को सिर्फ पूरी दुनिया में उस वक्त एक बंदा ही रोक सकता था और वो राजा सिकंदर सुल्तान है, मगर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने सिकंदर सुल्तान राजा से राब्ता करने में देर कर दी। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रम्प ने रूसी सदर व्लादिमीर से फोन पर बात की। ट्रम्प ने व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में जंग को ना बढ़ाए। तुर्की के सदर से भी ट्रम्प मुबारकबाद वसूल कर चुके हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। हमारी तरफ से कॉल पर कॉल मिलाई जा रही है, मगर दूसरी तरफ शायद अभी फुर्सत नहीं है बात करने की। बेचारे शबाही फोन सरहाने रखकर सोते हैं, नींद से बार बार हड़बड़ाकर उठते हैं और पूछते हैं ट्रम्प का फोन आया कि नहीं। अमरीकी 9 मुंतखब सदर ट्रम्प ने सोशल मीडिया की आजादी और इस पे हर किस्म की पाबंदी के खिलाफ जो इंतहाई सख्त पोजीशन इख्तियार की है, उसका पाकिस्तानी अमरीकियों को बहुत फायदा पहुंच सकता है। ट्रम्प की ट्रूथ सोशल पे तफसीली पोजीशन चेक करें। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए एक नया बढ़ता हुआ चैलेंज होगा। जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी अमरीकियों के खानदानों को अमरीका में किए गए ट्वीट्स की बुनियाद पे टारगेट कर रहे हैं, अब ये नए अमरीकी सदर की ऑफिशियल पोजीशन के खिलाफ होगा। अब आपको व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की पोजीशन मुख्तलिफ मिलेगी। अब ये इम्तिहान है पाकिस्तानी अमरीकियों का कि वो इस मौके को गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी को किस तरह और कितनी जहानत से इस्तेमाल करते हैं। ट्रम्प की जीत के बाद पीटीआई की जानिब से इमरान खान की रिहाई के इम्कानात का ये मतलब नहीं कि पीटीआई अमरीका की मदद मांग रही है, बल्कि रिपब्लिकन्स किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हैं, खसूसन ट्रम्प। इसलिए पाकिस्तान में अमरीका की मुदाखलत बंद होने के बाद खान 1 हफ्ते में रिहा होंगे। मुबस्सरीन के लिए ट्रम्प की पहली सदारत में ऐसे इशारे छुपे हैं जिनकी मदद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस बार अमरीका की क़यादत कैसे करेंगे। तजिज़ियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रम्प अपनी सदारत वहीं से शुरू करेंगे जहां ये 2020 में इख्तिताम पजीर हुई थी। ट्रम्प ने रियासत फ्लोरिडा में की गई तकरीर में कहा कि ये एक सियासी फतह है। उन्होंने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें 47वीं मर्तबा सदर बनने में किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी मुहिम के नारे आए अमरीका को फिर से अजीम बनाए का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस फतह के बाद हम अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाने के काबिल होंगे। ट्रम्प मुल्क की तारीख के दूसरे सदर हैं जिन्हें 2 मुख्तलिफ औकात में 2 बार सदर मुंतखब किया गया है। सवाल किए जा रहे हैं कि ताहम ट्रम्प का दूसरा सदारती दौर कैसा होगा, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी और वो कौन सी अधूरे मंसूबे हैं जिनको वो मुकम्मल करना चाहेंगे। ट्रम्प की खारजा पॉलिसी क्या हो सकती है। इम्कानात हैं कि अमरीका की खारजा पॉलिसी के हवाले से सदर ट्रम्प की दूसरी सदारती मुद्दत उनकी पहली मुद्दत से मुशाहबत रखेगी। वो चाहते हैं कि अमरीका को दुनिया के तनाज़ात से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि वो रूस के साथ मुज़ाकरात या मुआहिदों के जरिए घंटों के अंदर यूक्रेन जंग खत्म कर देंगे। ताहम ये इकदाम डेमोक्रेट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हौसला अफजाई करेगा। दूसरी जानिब ट्रम्प ने खुद को इसराइल का हामी करार दिया है और उन्होंने इस बारे में बहुत कम बयान दिए हैं कि वो गजा और लेबनान में जारी जंग कैसे खत्म करेंगे। इमरान खान ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझे निकलवाओ या मेरे केसेस खत्म कराओ, खा पाकिस्तान के ताकतवर लोग हों या ट्रम्प हो, बल्कि हमेशा यही कहा कि आप न्यूट्रल हो जाओ। खान कहे ना कहे ट्रम्प के आने से फर्क पड़ेगा। हमारे वाले तो अमरीका की सांस के साथ सांस लेते हैं, बल्कि अमरीका की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते। अब अमरीका की पॉलिसी ही बदल जाएगी तो पाकिस्तान के हालात भी बदल जाएंगे। अमरीकी सदर की अपॉइंटमेंट देखकर सारी दुनिया को अंदाजा हो रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी और बाकी ममालिक के ओवरसीज मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ट्रम्प ने अपने जलसों में खान कार्ड खेला था और अब ओवरसीज पाकिस्तानी लाजमी उसे पाकिस्तान में पामाल होते इंसानी हुकूक के सबूत भी दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।